to thank sir for giving me a chance to engage with you all. And personally, I feel that experiences and strategies they differ from person to person. What might have worked for me may not work for you. What may work for you may not work for me. But yes, as in because he's asked me to share my experience, I'd like to, in short, share what was not working for me and then what eventually worked for me, because that was my learning experience. Of course, it may differ from person to person. So in that, I would say that anything specific which you want to ask, accordingly I'll modify. Anything which you want to talk about, which you want me to talk about, anything is there. All right, I'll talk about my interview experience. Anything else you want to in specific ask? Yes. All right. Okay. Yes. Okay. So three things I'll discuss: interview, essay, and history. Anything else? Paper two. Okay. So I'll start with. Okay, I'll give 5 minutes to each. I'll start with my interview experience. Rightly, you pointed out that it's very unpredictable, and then there's no like time period also to prepare. In my case, what happened was like my interview was on the very first day, that is the 8th, and I had my interview, UPSC interview on the 8th. 9th was my medical, 10th was my TISCA HRM interview. So I was almost in a state of panic. Whatever I had prepared previously, like that is mains ke dauran wali preparation really works when it comes interview wala time, because you do not know what time period your interview will happen. And this is also the time when your survey comes. This is also the time when your budget comes. तो अगर आपने पहले साल का बजट एंड सर्वे एनालाइज कर रखा है प्रॉपर्ली, दैट विल कम हैंडी फॉर यू, बिकॉज फिर आप क्विकली वो जो नए नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, स्ट्रैटेजी सेम गवर्नमेंट की तो सेम ही रहा, तो वो आपको जल्दी से ग्रास्प करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने पॉलिटिकल और आपके स्टेट रिलेटेड इश्यूज हो रहे होते हैं कि इंटरव्यू के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता उसके लिए. So in my case, then what happened? I prepared everything. It was also Women's Day that day. I had prepared a number of women's predictable issues also. But I entered the room. I was the first to be interviewed, and they started. I don't know whether मेरे face पर economics लिखा हुआ था या नहीं. They started with inflation, and they went into the budget, the railway budget, the farm economy, then U.S. Federal Reserve tweaking with the rates, impact on exports. मतलब my interview was very unexpected. It was purely based on economy, although I do not know. But since I had been teaching economy somewhere, so I was in touch with it. So thankfully, I could answer that. Happened. Had it been something else, if they asked me Lakshmikant or something, I would have been in a state of panic. Yes. So again, you cannot predict what they'll ask. So what I'll suggest for interviews is that always keep it at the back of your mind whenever you're studying any editorial, any article, or anything with respect to pre also. Always remember you have to sit for 3 stages, and UPSC can take you out in any stage, and it will not issue you a certificate. It was pre में बाहर हो या mains में बाहर हो या interview में बाहर हो, we're all equal there. So you have to qualify all the stages. So whenever this personally I believe, like अगर आप कोई issue पढ़ रहे हो, suppose आप prepare कर रहे हो GDP पढ़ रहे हो economics में, तो GDP और employment related pre में भी questions आने हैं. Types of unemployment, structural या classical आपको pre में आएगा question. GDP GNP प्री में क्वेश्चन आएगा. अदर टाइप्स ऑफ जीडीपी रिलेटेड स्टफ प्री में क्वेश्चन आएगा. एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या होती है प्री में क्वेश्चन आएगा. उसी टाइप जब आप वो चीजें पढ़ ही रहे हो प्री के लिए, तो दिमाग में रखो कि हाँ इससे रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है. वाई इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ है, क्यों इंडिया की एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कम है, कैसे हुआ ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी से टर्सरी फॉर एग्जाम्पल. और उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू में भी वो चीज पूछी जा सकती है. तो जब आप पढ़ ही रहे हो कोई चीज, तो देन डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन बाउंड्रीज. ये तो मैं सिर्फ फ्री के लिए है, ये सिर्फ कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ फ्री का होगा या जो सिर्फ मेंस का होगा. मोस्ट टॉपिक्स विल कोइंसाइड सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो एंड स्टेज वाइज ऑल्सो. तो whenever you're studying anything except for the last month, जैसे अभी तो प्री आ रहा है तो होलसेल आई एग्री कि हाँ वो फोकस रिमेन्स कि हाँ अभी प्री पर रखना है. बट अदरवाइज आज से 1 महीने पहले से जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे एनालाइज कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट फ्री में क्या आ सकता है क्वेश्चन. इस साल का सर्वे फॉर एग्जाम्पल आप अगर देख रहे हो, they've given a number of good points about pulses to productivity, about drip irrigation and all. They can ask you in free this time, drip irrigation में A, B, C, D ऐसा है, which of the following is true or false. Mains also then they can ask the same question. Why? What is the problem that we have? We cannot improve our agriculture until unless we improve our water management.
They can ask you such a question in mains also, in your paper 1, in your paper 3. So again, that is, you will find a number of good points in your survey. So, and similarly they can ask you budget से, उस वक्त budget आएगा तो budget से relate करके वो आपसे question पूछ सकते हैं उसमें interview में. So it's just that keep an integrated strategy. तो फिर वो last वाला जो time है आपका वो interview का, वो काफी अच्छा जाएगा. आप recent issues prepare कर सकते हैं, background आपका clear होगा, फिर वो आपसे कुछ भी पूछना, at least something, some logical answer you will always have. I hope. I see this year actually was not in Delhi. I was living a pretty secluded life somewhere. So यहाँ पर I sat for mock test in 2014. Also gave vision के mock test in 2014. So and I really benefited from them. This year I did not join because I had previous test papers and यहाँ आना possible नहीं था मेरे लिए. But yes, mock tests they really help you to evaluate yourself and personal attention कई बार आपको मिलती है कि ये चीज़ सही लिखी है, इसको crisp बनाना है. That really helps. No, nothing. Even I was wondering why. It can be probably because my first preference was IAS, second was audit and accounts, and third was revenue. So maybe they were testing me on my second and third preferences. That is one thing I can guess. Otherwise, I don't know. Maybe they were bored of everything else that was happening. They didn't ask me anything related to any other thing. Okay, coming to history. Uh, हिस्ट्री सी अगेन ट्राई टू इंटीग्रेट योर स्ट्रैटेजी विद योर जीएस. अगर आप जीएस के भी हिस्ट्री की क्वेश्चंस को इस बार एनालाइज करेंगे और आप ऑप्शनल के एनालाइज करेंगे, यू विल फाइंड दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल हिस्ट्री, दैट्स स्विचिंग टू कल्चरल वाला पार्ट. तो उस सेंस में आप अपने आंसर्स में ट्राई टू मॉडिफाई एंड एक्सप्लोर दोज लिंकेजेस बिटवीन थीम्स जो हैं, उसमें आपको एनसीईआरटी काफी हेल्प करेंगे. अभी तो आई हैव शेयर्ड माय हिस्ट्री ऑप्शनल स्ट्रैटेजी ऑन इट आउट देयर proper with notes and Google Drive में links. Anything else? I think three things were to be discussed. अच्छा हाँ, essay. See, essay again, it's a very highly subjective paper. So what I would suggest is recently because I scored 147 in essay, so a lot of, and also I'm a pretty literary person, so people have been asking me कि अगर essay में आपका literary touch नहीं है, you cannot write quotes and all, तो आपके number नहीं आएंगे. So I would like to say ऐसा नहीं है. It does not matter whether आपकी literary touch है, आपकी language बहुत अच्छी है, light language है, तो ही आपके essay में number आएंगे. ऐसा होता तो मेरे पिछले जो attempts थे उसमें मेरे marks आने चाहिए थे, जो कि नहीं है. What I would say essay के लिए दो important चीजें होती है. First is content. सबसे important चीज रहती है content. You must have logical arguments relating to every aspect. Suppose there is an issue about technology. तो technology का क्या cultural impact है, क्या societal impact है, क्या economic impact है, क्या political impact है, क्या ethical impact है. I must have some logical points plus with recent and historical examples. So the more such points content wise you have, the more better is your essay. And second, after content, then comes your structuring. Because if I have good points, I have good examples also, but I'm not able to integrate them and divide into nice paragraphs and make linkages between those paragraphs, then it goes to waste. So I think rather than language, rather than a catchy introduction which acts as a cream on the pastry, what works is that you must have first of all content with good examples. Second, your structuring. As long as that is fine, you can easily score 130 plus marks. अब उसके ऊपर if you can start with a good quote or with a decent something integrated जो आपकी introduction, conclusion, body को बांध सकता है, you remember of some saying by some person, it's the cream on the pastry, and +5 और +10 accordingly आपको मिल सकते हैं. मगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे introduction से start करें और बाद में आपके पास content की कमी हो जाए, तो वो उससे नहीं होता है. And second thing which I would like to say, हम लोग normally क्या करते हैं, हम सोचते हैं GS prepare कर लेते हैं, उसमें भी हमारा ध्यान ज्यादा पेपर 2 और 3 की तरफ रहता है, बिकॉज देयर आर दोस डायनामिक एंड वेरी वास्ट पेपर्स. तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं वो 250 मार्क्स का पेपर जो एक्चुअली में हमें नहीं करना चाहिए. तो इसमें भी अगेन सेम स्ट्रैटेजी सही कि रादर देन गोइंग फॉर सब्जेक्ट, गो फॉर थीम. अगर आप जीडीपी एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हो तो कल को जीडीपी एम्प्लॉयमेंट पे एससे भी तो आ सकता है, वो सेम कंटेंट आप एससे में भी यूज कर सकते हो. तो मे बी यू कैन डिवाइड योर नोट्स ऑनलाइन और ऑन पेपर पैरेलली. अच्छा ये आया तो I'll analyze this way in this paper. इसमें तरीके के questions बन सकते हैं. और ऐसे में similarly इस तरीके से questions आपके आ सकते हैं. Is GDP a worthy indicator of development? For example, you can get an essay like that. उसमें आप same content ही लिखोगे, same examples ही लिखोगे, but again हम कभी बैठ के सोचते नहीं कि हाँ essay के पेपर में अगर इस तरीके का आया तो क्या लिखेंगे. Similarly, society
ग्लोबलाइजेशन, वुमेन इश्यूज भी प्रिपेयर, सोसाइटी में भी पूछ सकते हैं वो आपको कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन, उस सेंस में आप प्रिपेयर करोगे। देन पेपर 2 में भी आपको पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन, क्या चेंजेस क्या नहीं, ऑल दोज एक्ट। पेपर 3 में ऑल्सो इकोनॉमी रिलेटेड की वाई द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इज सो लो इन इंडिया, देन दे लिंक इट विद एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी वाला फैक्टर। तो जब आप प्रिपेयर कर ही रहे हो वुमेन इश्यूज तो सारे लिंकेजेस के साथ करो, रादर देन सेइंग कि अभी मैं पेपर 1 पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पेपर 2 पढ़ रहा हूँ। दैट इज व्हाट वन थिंग व्हिच वर्क्ड फॉर मी। तो कितने कौन कौन अकेडमी के लिए? See, again, this is my fourth attempt, and like I would qualify pre every time, but वो means में again कुछ problems हो रही थी कि 30 marks, 9 marks and so on. So yes, I agree that वो motivation, demotivation वाला factor, social pressure, they exist, and we're living a secluded life, all of us. But one thing I would say in this is that ठीक है यार, मतलब it's just an exam. First of all, we have to accept that. If you take it as something बस यही है जिंदगी, तो फिर आप उसको इतना बड़ा बना लोगे कि आप खुद को छोटा बना लोगे. So don't do that. Just keep going ahead with it. Schedule wise ऐसा नहीं है कि आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है. Of course that differs. Some people are very good at grasping things. तो वो 3 घंटे भी पढ़ के they'll study the same thing जो मैं शायद 6 घंटे में पढ़ूंगी. So it depends on what some subjects are of interest to you, some are not. Like I was very fond of history, तो कभी मुझे like low type का feel होता था, I would pick up history because I used to consider it as my strong point. कि हाँ इसमें I can excel. But again, it can differ from person to person. So rather than thinking about what others are saying and what is happening around, just trust yourself, learn from your mistakes. अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पेपर में बार बार नंबर कम आ रहे हैं, then try to dig in deep कि अच्छा क्या गड़बड़ हो सकती है. तो जस्ट ट्राई टू अपनी ही स्ट्रैटेजी को एनालाइज करो कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर. तो अगर मेरे एस्से में लगातार 2 साल से एक बार खराब नंबर आया, आई कैन ब्लेम कि यार नंबर नहीं दिया उसने, मेरे एस्से को कंसिडर नहीं किया, ठीक है. बट अगर दोबारा ऐसा हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट तो मेरी स्ट्रैटेजी में रही होगी कि 2 बार रिपीटेडली आई एम बीइंग वार्न्ड की लो मार्क्स आई एम स्कोरिंग. सो maybe I can overhaul my strategy, maybe I can improve, learn from was what was going weak. So I would say ki just try to analyze your strategy and learn from it and then keep working towards it. And also I would say ki rather than running blindly after so many test series and so many things, focus on yourself, because I think in this attempt this worked for me. I did not join any test series. I was not running after material. I just whatever I had, I consolidated it. And उसी में से I tried to develop a number of linkages कि अच्छा ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. So try to think as a teacher कि आप अगर किसी और को इस चीज़ के बारे में बता रहे होगे तो आप किस स्ट्रैटेजी से बताओगे. छोटे बच्चे को जैसे बताते हो ना कि अच्छा ये है तो सर्वे पे से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उस तरीके से जब आप सोचना शुरू करोगे तो यू विल इवॉल्व एज अ पर्सन इन दैट सब्जेक्ट. तो वो आप ऊपर से उसको एनालाइज कर पाओगे, अच्छा ये इस पर्सपेक्टिव से कह रहा है, अगर सर्वे में ऐसा लिखा है तो बजट में भी ऐसा हुआ होगा. एक्चुअली में आपको लिंकेजेस मिलेंगी. अब देखोगे वो प्रोविडेंट फंड वाली स्कीम्स आई थी और सर्वे में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दे रखा है. तो उस तरीके से सोचना शुरू करो एंड eventually you'll grow in that thing. So then you won't get demotivated that way. Ethics, see as such I read this, there was some last year topper का in Brunel or Insights, मैंने एक interview पढ़ा था. He was the highest scoring person in ethics and he said I just referred to the very basics of that subject. So this year like last year से जो भी मैंने अपने पास मटेरियल कंसोलिडेट कर रखा था उसके साथ I just referred to looked for the very basic definitions on Wikipedia and other things, gathered some examples, did writing practice. So I think rather than following a very hi-fi approach in ethics, just analyzing इस स्कूल में एरिस्टोटल ने ये कहा, ये मतलब वो लिखो that there are some very wonderfully spoken things. If you can add them in your answer, add them, but don't let your answer reflect just what Aristotle thinks about happiness, because they want to know what you. आपने एरिस्टोटल पढ़ा, आपने प्लेटो पढ़ा, आपको समझ में है उन्होंने कहा, बट व्हाट डज इट मीन टू यू, वो डिग करना चाहते हैं. तो अगर आप वो चीज़ ही नहीं लिखोगे और यू राइट अबाउट एनी फिलोसोफर देयर, कोट भी कर रहे हो आप, तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो जितना ज़्यादा आप लिंकेजेस, नुआंसेस एक्सप्लोर करोगे और बेसिक्स पे स्टिक करोगे, आई थिंक उससे एक तो आपका खुद भी इंटीग्रेशन अच्छा बनता है, आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल्स वहाँ पे याद आएंगे और आपके आंसर्स में वो चीज़ झलकेगी कि वट एवर यू राइटिंग इट विद दैट ट्रूथफुली. तो वो
बंधा हुआ आंसर आएगा रादर देन आप एकदम से एक्सप्लोर कर रहे हो अच्छा ये। तो इस बार एटलीस्ट आई इम्प्रूव्ड। इससे मैं यही जो चेंज किया मैंने वाज दैट कि स्टिक टू योर बेसिक मटेरियल एंड कॉन्स्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर नहीं छूटना चाहिए था। इन माई केस अगेन मेरी एक पूरी केस स्टडी छूट गई थी, तो अगेन वो 20 मार्क्स का लॉस था, जो कि ऑफकोर्स मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आई जस्ट स्कोर 90। अगर वो लिख कर आती तो 98 के करीब एटलीस्ट मेरे उसमें आ सकते थे। तो वही है कि आपको जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता। मेरा नॉलेज बेस क्या है वो एग्जामिनर को नहीं पता, वो मुझे एज अ पर्सन नहीं जानता। जो मैं लिख कर आ रही हूँ उससे मुझे जज करेगा। तो अगर मैंने लिखा ही नहीं पेपर में तो फिर वो जजमेंट की तो कोई बात ही नहीं आती। तो इसलिए ट्राई की जितने ज़्यादा टेस्ट आप दे सको, इवैल्यूएशन करा सको सर से या अपने पीयर ग्रुप में, दोज थिंग्स रियली मैटर। बिकॉज अगेन यहाँ पर बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैप्पीनेस, तो आई हैव अ व्यू, योर फ्रेंड अगेन हैज अ व्यू। जब आप 4-5 लोग मिलकर बैठोगे एंड आपको 4-5 व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे आप एक ब्रॉड आंसर लिखोगे। हैप्पीनेस ये भी हो सकती है, ये भी होती है, डिपेंड्स, इसके लिए ये थी एग्जाम्पल, इसके लिए ये थी, इसके लिए ये थी, मेरे लिए ये वाली चीज़ है। वहाँ पर आप फिलोसफर्स की भी हेल्प ले सकते हो कि एरिस्टोटल हैज टॉक्ड अबाउट कि भाई वो लास्ट थिंग जो एवरी ह्यूमन बीइंग डिजायर्स, दैट व्हाट ही कॉल्स यूडेमोनिया एंड ऑल। बट अगेन उसे एक लाइन से ज्यादा मत लिखो इस टाइप के आंसर्स में, अदरवाइज आपका आंसर लगेगा किसी ऑप्शनल का आंसर है। उसे बेसिक से जितना आप अप्रोच कर सकते हो उतना उसमें बेटर रहेगा। लास्ट मिनट टिप्स फॉर प्रीलिम्स okay, see, I would say कि prelims is not about going too much depth into everything, और it's not about कि ये किताब पढ़ ली तो prelims हो जाएगा। आप ये देखो पुराने questions किन किन themes पर आए हुए हैं। You'll find a number of questions on similar themes repeated. तो इसका मतलब there are certain themes which they are exploring, which you must know everything about them. और स्पेशली एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ये थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप लास्ट 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, you can find out about those themes and just revise them exam से पहले very well. Practice your maps very well. Atlas से important चीजें अच्छे से देख कर जाओ, क्योंकि वो चीजें भूल जाते हैं। लक्ष्मीकांत को लास्ट के 2 दिन में जरूर देखना, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो हम सोचते हैं हमें आती हैं, बट क्या होता है कि वहाँ पर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर नॉट अ चैलेंज। वो 15 क्वेश्चन जिनके बारे में आपको एबीसीडी नहीं पता, वहाँ पे इंगी पिंगी पोंगी खेलने से फायदा ही कुछ नहीं है। वो तो छोड़ दो, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पुराने क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट मिनट इससे ज़्यादा नया मत पढ़ो अभी, जस्ट कीप रिवाइजिंग ऑन द ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स। और अभी न्यूज़पेपर्स एंड ऑल्सो भी जस्ट चेक द थीम और उसके बेसिक्स रादर देन गोइंग आफ्टर द एनालिसिस वाला पार्ट। आई डिडंट यूज डायग्राम्स, आई प्रॉपर मतलब सब हेडिंग्स यूज की थी मैंने, बट डायग्राम्स या फ्लो चार्ट यूज नहीं किए। बट ऐसा कहते हैं कि कर सकते हैं, मतलब आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने बनाए हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा इससे एक डायग्राम या फ्लो चार्ट मे बी वर्क्स बट नॉट अ लॉट ऑफ देम। केस स्टडीज की आई वुड स्टार्ट विद एक 3-4 लाइन अबाउट व्हाट आई अंडरस्टूड आउट ऑफ द केस स्टडी। मतलब प्रॉब्लम का डायग्नोसिस क्या है, दिस और दीज आर व्हाट आई थिंक द प्रॉब्लम्स आर एंड व्हाई दे मस्ट बी सॉल्व्ड इन द सेकंड लाइन, एंड देन द स्ट्रैटेजी जो अकॉर्डिंगली पूछी हुई है। तो उसमें से मैं पॉइंट्स में आई वुड हाईलाइट दिस इज हाउ आई विल गो अबाउट इट। आई थिंक कोर्स ऑफ एक्शन पार्ट, बिकॉज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में कहीं ना वो इंटरमिंगलिंग हो जाती है कि आप इसमें आपने फर्स्ट उसमें लिख दिया, सेकंड में भी वो सिमिलर ही जाएंगे। तो रादर देन उन पर फोकस करो, आप एज अ पर्सन उसको क्या इनोवेटिव स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी ना ट्राई यू कैन अडॉप्ट दिस अप्रोच, एक इंस्टेंट आप ये करोगे, दिस इज व्हाट यू विल डू नाउ बिकॉज द प्रॉब्लम हैज कम राइट नाउ। बट कल को उस प्रॉब्लम से आप कुछ सीखोगे भी, तो कल को प्रॉब्लम रिपीट ना हो, लास्ट में आप वो भी लिख सकते हो कि व्हाट प्रोएक्टिव मेजर यू कैन टेक सो दैट दिस सच अ प्रॉब्लम डज नॉट come into existence tomorrow। वो प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है, पॉजिटिव अप्रोच आप लास्ट में केस स्टडीज पे दिखाते हैं। जीएस पेपर 2 आई वुड से न्यूज़पेपर्स आर द मेन सोर्स, बिकॉज अगर आपने देखो प्री में आपने ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ लिए हैं अबाउट गवर्नेंस एंड पॉलिटी, वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं। दे आर पिकिंग एनी इवेंट, एनी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एनी पॉलिसी विच इज इन न्यूज, एंड उससे देन दे आर रिलेटिंग दैट बेसिक एंड देन दे आर आस्किंग। तो बेसिक वाला जो अपना आपका भी जहाँ पर भी यू आर कंपाइलिंग योर मटेरियल, ट्राई कि आप अपने न्यूज़पेपर से कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो उसको लिंक करो कि किस बेसिक में लिंक करके वो क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड जैसे हो गया, तो आपने सुप्रीम
कोर्ट लक्ष्मीकांत से पढ़ा, यू स्टडीड अबाउट एवरीथिंग, ऑल द आर्टिकल्स यू नो, बट देन जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, या सुप्रीम कोर्ट के केस में आजकल देन वो भी चल रहा है कि इज इट लूजिंग इट्स रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय गिविंग सो मेनी, लाइक बाय इंक्लाइनिंग इटसेल्फ सो मच टुवर्ड्स पीआईएल एंड ऑल, वो आपसे पूछा जा सकता है। एडीआर मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नालसा वाली चीज पूछी जा सकती है। तो देन यू हैव टू एक्सप्लोर कि इसकी क्या इंटरलिंकेजेस बन सकती हैं और उनमें से कौन सी इंटरलिंकेज न्यूज में। तो अगर कोई चीज आपकी 1-1.5 साल से न्यूज में रही है लगातार, तो जस्ट ऑलरेडी कीप योर मटेरियल रेडी की अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द एनालिसिस। तो इस तरीके से जितनी लैंग्वेजेस आप एक्सप्लोर करोगे वो उतना आपको उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कल को आएगा एक पर्टिकुलर रिसेंट इवेंट को कोट कर देंगे और ऐसा भी आएगा, लगेगा आपको 1-2 इवेंट्स या क्वेश्चन में आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा, इवन इन दिस पेपर यू विल फाइंड कि कुछ तो ऐसी चीजें थी जो आपको लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया है, बट उसको भी आप एटलीस्ट अपने बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पूछ लिया, आपको नहीं आइडिया है कि वो कब आया क्या है, एटलीस्ट आप उस टर्म से आइडिया लगा सकते हो, या आपने कहीं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का कभी कुछ पुराना हल्का फुल्का पढ़ा था, यू कैन लिंक इट विद द प्रॉब्लम्स व्हाई दिस एक्ट की जरूरत पड़ी, तो उससे आप थोड़ा बहुत एनालिसिस टैकल कर सकते हो। तो भले ही आपने एक्ट नहीं पढ़ा, एटलीस्ट राइट अ पैराग्राफ ऑफ सेंसिबल pros and cons about whatever is being asked rather than leaving the question. So I think current affairs paper 2 and 3 current affairs based है, उसके लिए you have to integrate with your newspapers. पेपर 1 and 4 का ये आप पहले से फिर भी एक अच्छा अप्रोच से आप प्रिपेयर करके अपने पास खत्म करके एटलीस्ट एक बार रख सकते हो, क्योंकि वो मोस्टली स्टैटिक रहते हैं। एंड बट 2 and 3 का ये कि आप भरोसा नहीं है तो आप कह नहीं सकते, आपको पूरे साल उसके लिए एक्टिव रहना ही पड़ेगा, जो भी आपका ट्रेडिशनल मटेरियल है प्लस जो भी आप एड ऑन उसमें कर रहे हो। So this is it. Anything else? Yes, I would make notes, but again my notes would be like कि एक थीम वाइज हो जाएगा, तो वो अपनी लैंग्वेज में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर लिख सकते हो। आई वोंट से प्रॉपर नोट्स बनाए थे, बट लिंकेजेस एक्सप्लोर करते हुए समथिंग टू कि मेरे माइंड में सेटल डाउन हो जाए, दैट्स वन थिंग जो कि आप रिवाइज कर सकते हो इजीली। अब एग्जाम से 1-4 घंटे पहले जो आप सुबह उठकर रिवाइज करो, कैन फ्लिप ओवर देम, तो वो लिंकेजेस आपको याद आ जाते हैं। डिपेंड्स अगेन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। See, again, it is not what I personally think. When you write ethics में answers, they are probably not interested in what stand you take. They are interested in if you are taking a stand, that why, what is the why, what justification are you doing. तो अगर कल को आपका सेकंड बेस्ट स्टैंड भी लिया आपने, तो काफी लोगों के ओपिनियंस आपको लगेगा नहीं बेस्ट तो ये है, सेकंड बेस्ट स्टैंड लिया, लेकिन अगर आपने उसे प्रॉपर्ली एथिकली जस्टिफाई किया आपकी सब प्रॉपर एनालिसिस के साथ, I think that is what will make your answer better. Because that they're not asking what, they're not stressing on that what. They want to judge you as a person why you will do that. तो अगर आप उसका प्रॉपर दे सकते हो कि भाई मैंने सपोज उसमें कुछ था ना, डायबिटिक पेशेंट को इसलिए बचाया बिकॉज वहां पर उसको अगर सपोज कंसर्न नहीं मिलेगी मेडिकल अटेंशन तो वो मर जाएगा वो, तो देयर आई गिव इम्पोर्टेंस टू लाइफ, या एल्डरली वाला इशू को आप वहां पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो दैट वे यू कैन मेक श्योर अगर आप कुछ अलग सा अनोखा लिख कर भी आ रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, उसमें भी इतना अनोखा नहीं एक्सप्लोर करना कि वो गड़बड़ हो जाए। तो दैट इज इट। यस, ओके। See, what do you do when you get when you are in tension या frustrated हो जाते हैं, होता है लक्ष्मीकांत का overdose हो गया, what do? You go to a friend, you discuss cricket or something. That's how you take it out. That's my way of taking it out. टॉपिक्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को आप देखो, अगर एजुकेशन पॉलिसी आने वाली थी उस दौरान तो एजुकेशन रिलेटेड वो हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन पूछ सकते थे, प्री वॉल्यूम प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते थे। इसी वजह से वो जापान और वो रोबोटिक्स का बड़ा न्यूज़ में था, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो पूछ सकते थे। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेररिज्म ISIS की वजह से काफ़ी न्यूज़ में, देन यू कैन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट वाला इशू इंडिया में पेरिनियल है तो कभी भी आ सकता है। तो इस तरीके से देखो, आई वोंट से कि वी कैन जज राइटली, पर अगर आपने 10-12 इश्यूज भी प्रिपेयर कर लिया, आपके पास कोहेरेंट मटेरियल है, उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो उस तरीके से एटलीस्ट यू कैन कलेक्ट या कंपाइल मटेरियल। आई वुड सजेस्ट राइट एसेज ऑल्सो, ऑल्दो आई डिड नॉट गेट टाइम कि मैं प्रॉपरली ऐसे लिख सकूँ, बट यस अगर आप कोहेरेंटली ऐसे टाइम में लिख रहे हो तो दैट रियली दे से कि इट वर्क्स अ लॉट। सो इफ यू कैन फाइंड टाइम फॉर दैट इट विल बी रियली नाइस।
सेम ईयर में तो अभी इस साल भी छुटे हैं, पेपर 1 में भी 20-25 नंबर का छुटा था, पेपर 4 में भी। ऐसे कि प्रैक्टिस एज मेनी पेपर्स एज यू कैन, गेट देम इवैल्यूएटेड बाय योर फ्रेंड्स एंड सम टीचर, बट एटलीस्ट डेली यू कैन 2 आंसर्स लिखने की कोशिश करो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे ऑफ इम्प्रूविंग इट, अदरवाइज यू जस्ट बट आई पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू फिनिश योर पेपर, क्योंकि वो बहुत सेंटी वाला चीज़ होती है कि आप पेपर देकर आओ और आपको मालूम है कि इस पर आप पॉइंट्स लिख सकते थे एंड समहाउ यू कुड नॉट राइट, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो बाद में आपको या तो इन और आउट वाली स्थिति आ सकती है, और या फिर आपकी रैंक में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो वो रिग्रेट रहे उससे बेटर है कि यू कैन प्रैक्टिस रादर देन गोइंग आफ्टर लॉट ऑफ मटीरियल, इसका भी जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग कि हाँ मेरे आंसर में अगर नुआंसेस सारे कवर हो रहे हैं विद एग्जाम्पल्स, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की फिर ज़रूरत नहीं है, फिर इंप्रूवमेंट आप अपनी राइटिंग स्पीड पर करो तो बेटर है। Okay, then it was nice talking to you. All the very best. And in case I think sir may arrange something like 11th or 12th August ko, because I've taught economics and geography, so something I can like share about them, I would love to. So in case such a thing is arranged, then see you all again. And thank you so much. All the very best.